अगर आप भी चाहते हैं कि आपका स्कोर 6.5 से कम ना आए स्पीकिंग में, तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है। और जो स्टूडेंट्स 5.5 बैंड बार बार ले रहे हैं, स्पीकिंग में उनका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो किसी वरदान से कम, किसी अमृत से कम नहीं है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। अगर आपको ये चीजें सीखनी है, आपको मैं सिर्फ 3 टिप्स बताऊंगा। ये 3 टिप्स आपको फॉलो करने, मैं गारंटी लेता हूं आपके जो स्कोर हैं गारंटी के साथ 6.5 से कम नहीं आएंगे। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं। लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखिए, आपका ही नुकसान होगा। आपको एक बार ये वीडियो यूट्यूब ने दिखा दी है, नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप अपना इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दोगे। जो स्टूडेंट्स आइल्स को लेके सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा, प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम चलते हैं वीडियो की तरफ। और आप सारी वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So let's begin with the first important point. You should rephrase the question. What I mean by that, whenever examiners ask you some questions in the speaking section 1 or speaking section 3, majority of students, they steal some words from the questions and they try to answer it, which is, in general term, I would say it's not the better way to get higher score under the marking criteria of vocabulary. So what do you have to do? You should always try to rephrase the questions so that you can get higher score in your speaking exam. For example, if examiner asks you, who is your favorite celebrity? Instead of saying, my favorite celebrity is maybe any name, maybe Salman Khan, maybe Akshay Kumar, maybe any cricketer, you should say, I am big fan of Akshay Kumar, I am big fan of Salman Khan. Or you can use some other ways to rephrase the question so that you can get higher score under the marking criteria of vocabulary. Let's move on to the tip number 2. Tip number 2 is you should use expressions in your speaking exam. I have noticed many students, they don't use expressions. Simply, they sit in the IELTS exam in front of examiners and they behave like a 3rd or 4th class student. So your speaking level should be higher and you should always use some expressions in order to get higher score. For example, if examiner asks you, can you do 2 tasks simultaneously? Or he can ask you, can you do 2 things simultaneously? Or he can ask you, can you concentrate on 2 things at the same time? Majority of students will answer like this. They will say, I'm sorry, I cannot concentrate on 2 things simultaneously. Instead of saying these particular sentences, you can use some expressions. For example, to be honest, I can't do this. To be very frank, it's very difficult task for me to concentrate on 2 things at the same time. So hope you got this point and you will use some expressions so that you can get higher score in your speaking exam. Let's move on to our final tip, and it is you should keep a steady pace in your real exam. What generally happens when students sits in the IELTS exam, they make mistake. I mean, when they practice their IELTS speaking in the coaching centers, they have list of questions. They have list of speaking part 1, they have list of speaking part 2 as well as speaking part 3. But when they sit in exam,
they, because they have practiced a lot about the part 1 and part 2 questions, they are unable to maintain the speed of their exam in the last part 3 of the IELTS speaking section, because they have memorized some answers and their speed level is a little bit higher in speaking part 1 and in speaking part 2. But when it comes to speaking part 3, they are unable to maintain the pace or speed of their fluency in the speaking section 3, and they fail to maintain the steady pace, which is a blunder. And examiners are well trained, they can understand the kind of mistakes you are making, the kind of memorization you have made in the part 1 and part 2 questions, and because you have failed to maintain that speed in the speaking part 3, you are going to be penalized. So please maintain equal amount of pace or speed in 3 parts of the speaking section, so that examiners can offer you some better scores. So I hope you have enjoyed my speaking tips, and please subscribe my channel and hit the notification button so that you can get some more videos, more useful videos on further topics. Thank you so much, and I wish you a wonderful evening. Thank you so much. सो आई होप कि स्टूडेंट्स आपने ये वाली जो मेरे स्पीकिंग के टिप्स थे इनको एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए मेरे साथ, वो आपको एक स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप उसके ऊपर मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए और आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और जो स्टूडेंट रीडिंग का PDF लेना चाहते हैं, क्योंकि कई बार वहाँ से हमारे पैसेजेस भी रिपीट हो रहे हैं, ऑलरेडी 13 और 15 को जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ से 2 पैसेज रिपीट हुए थे। तो अगर किसी स्टूडेंट को PDF चाहिए वो भी सिर्फ 100 रुपीज़ में उनको मिल जाएगा। आपको जो नंबर दिख रहा है उसके ऊपर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।